Assalamu alaikum. So this is the last slide of this current chapter. So first from the phenomena we'll be discussing is the escape velocity. Physical definition of escape velocity is that the velocity with which an object must be thrown in order to escape Earth's gravitational field. जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि it is escape velocity यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को escape करने के लिए जो velocity एक ऑब्जेक्ट को चाहिए it is called escape velocity. Formula इसका square root of 2g(r) है and exact value by putting the value of g and r, it is 11 kilometers per second. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम थ्रो करते हैं एट अ लोअर वेलोसिटी एक प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में नीचे आ जाता है. अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जाता है, यानी इसका कर्वेचर जो है इट नियरली मैचेस द ऑर्बिट एट अ सर्टेन वेलोसिटी, और उससे ज्यादा अगर वेलोसिटी हो तो इट कैन एग्जिट द gravitational field of Earth. So now moving towards the interconversion of energy. जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि in the work energy principle we said that the potential energy can be converted to kinetic energy and vice versa. यानी कि अगर हमारे एक बॉडी के अंदर एक टाइप ऑफ एनर्जी है तो एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यूमरस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं और एक बेसिक लॉ है एनर्जी कन्वर्जन का. तो अर्ली कंडीशंस में जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज डेल्टा के ई इक्वल्स टू डेल्टा पी ई, यानी काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन जो रियल कंडीशंस हैं वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व. सो अगर फ्रिक्शन को कंसीडर करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी along with the work done against friction, that is FH. The small f that is the force of friction, and h, it is the distance along which the friction is encountered. So इन दोनों का जो sum है that is equal to the change in potential energy. इस केस में हम देख सकते हैं कि an object at a certain height has a potential energy of mgh when it is allowed to fall freely. इसकी kinetic energy 0 से increase होती है and final kinetic energy is mgh when the potential energy becomes 0 at the lowest point. So we have a numerical problem. A cyclist cycles down a hill and has 90 joules of kinetic energy. He also did 10 joules of work as he cycled down. If he started from rest, what was his potential energy at the top of hill? Options are 90 joules, 10 joules, 100 joules, and 0 joules. Correct option is option C, 100 joules. इसका solution हम देखते हैं. पीछे हमने एक फॉर्मूला डिवाइस किया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. सो यहाँ पे साइक्लिस्ट की जो काइनेटिक एनर्जी थी दैट वाज 90 joules and work done against friction was 10 joules. So इनका जो sum है that is 100 joules is simply the potential energy जो कि साइक्लिस्ट की थी at the highest point of the hill. In the law of conservation of energy, it says that the energy can neither be created nor destroyed, but it can be converted readily into one form from another. इन किसी भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इजीली कन्वर्ट तो की जा सकती है, but it cannot be destroyed or created. And another form of this law is that the ultimate fate of any energy, that is ultimately all forms of energy, are converted to heat, which is the useless form of heat. क्योंकि हम एनर्जी को हीट की फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकते, इट इज यूजलेस टू अस, और इसी फिनोमेना को हम हीट डेथ भी कहते हैं. तो दिस इज अ सिंपल डायग्राम जो किसी एक कंडेंसर की है, यानी टोटल एनर्जी इनपुट इज कन्वर्टेड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. कुछ फ्रिक्शन के अगेंस्ट यूज हो रही है, कुछ कंडेंसर के पंप में यूज हो रही है, कुछ अल्टरनेटर में यूज हो रही है, कुछ इन द फॉर्म ऑफ हीट या स्मोक की फॉर्म में रिलीज हो रही है, और बाकी की एनर्जी एज अ यूजफुल एनर्जी हमें मिल रही है एज आउटपुट. Now the problem is that you whispered something in your friend's ear. What is the ultimate fate of that sound? Option A would be heard by someone else. Option B would vanish in thin air. Option C would be converted to heat. And option D, nothing would happen. So correct option is option C, would be converted to heat.
Reason here is the fate of every kind of energy in nature is that it gets converted into heat and is lost as unusable form. क्योंकि साउंड भी a type of energy है और किसी भी type of energy की जो ultimate destination है, it is that it converts into heat and is lost as unusable form. So that was all about this chapter of work and energy. Thank you.